let's talk about EC2, Elastic Compute Cloud. Okay, it is the greatest feature of AWS. Okay, or I can say greatest and highly used feature of AWS. Okay, highly used feature of AWS. Mainly, we deploy virtual machines in EC2. What we do? We deploy virtual machines. हम लोग virtual machines को deploy करते हैं by using this service, that is EC2. And here virtual machines, जो virtual machines हम deploy करते हैं, those are known as EC2 instance. क्या बोलते हैं? EC2 instance. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 machines चल रही हैं, 10 virtual machines चल रही हैं AWS में, so it is being called कि 10 EC2 instances are running. Okay, so virtual machines in EC2 are known as virtual or are known as EC2 instance. Various configurations of CPU, memory, storage, and network capacity is known as instance types. For example, हम कोई लैपटॉप लेने जाते हैं, we used to say कि भाई मुझे i3 चाहिए, मुझे i5 चाहिए, या मुझे डेल का लैटिट्यूड सीरीज का ये पर्टिकुलर मॉडल चाहिए, या HP का ये पर्टिकुलर मॉडल चाहिए. We used to ask vendor, है ना, हम वेंडर को बोलते हैं कि भाई, या शॉपकीपर को बोलते हैं कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन का हमें लैपटॉप चाहिए. तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक i3 होता है, i5 होता है, उसकी कुछ फॉर एग्जांपल 500 GB का डिस्क होता है, ठीक है, उसकी कुछ रैम भी होती है 8 GB 16 GB, ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ पे we have the instance types, ठीक है, that has the various configuration. They have a like of CPU, कि CPU आपका कितने कोर का CPU है, उसके साथ मेमोरी कितनी है, ठीक है, उसकी नेटवर्क कैपेसिटी कितनी है. On the combination of that, there are the instance types in EC2. अगर हम किसी भी मशीन को कनेक्ट करते हैं, राइट, मशीन कैसी हो सकती है, वर्चुअल मशीन कैसी हो सकती है, वेदर वी डिप्लॉय विंडोज ऑन द टॉप ऑफ इट, या तो हम विंडोज डिप्लॉय करते हैं या फिर वी डिप्लॉय लिनक्स, राइट. सो एनी ऑफ द मशीन विच वी आर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट, किसी मशीन से हम ऑथेंटिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट कुड बी वी नीड टू हैव पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर इट, राइट. किसी भी मशीन को हमें कनेक्ट करना है तो व्हाट वी नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड. बट हियर username and passwords are not used. Key pairs are used for authentication in EC2. ठीक है, हम instead of username and password क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं key pairs. The other thing is कि अगर हमने कोई मशीन प्रोविजन की तो उसके ऊपर कोई भी unnecessary ट्रैफिक हिट कर सकता है, राइट. उसकी बैंडविड्थ को चोक करने का ट्राई कर सकता है, उसे हैक करने का ट्राई कर सकता है. So there are security groups which are attached with EC2 instance to stop unwanted traffic to reach out to EC2 instance. ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करते हैं, हम EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं किसी भी तरीके का अनवांटेड ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए. ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू आइडिया अबाउट EC2. लेट्स गो. Here the URL, you know, console.aws.amazon.com. We need to go here. We need to log in and let's go. Okay. So once we log in into AWS account, the account appears to be like this only. Okay. Account appears to be like this only. So here we are, and we can go here into the services and we will be able to see like lot more services are being here. Okay, if I click on all services, then I may click here view all services. So here we can see lot more services are there. बहुत सारी services and services categories हैं which are available here. So the first service which we will talk about is EC2. I'll go here, click on EC2. This is the dashboard. ये डैशबोर्ड है विच शोज कि भाई हाँ मेरे पास कितनी मशीन्स रन कर रही हैं, कितने डेडिकेटेड होस्ट हैं, लोड बैलेंसर्स हैं, एंड सो मेनी थिंग्स आई कैन सी हियर, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे कोई वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करनी है, ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू.
राइट, बट आई हैव टू डू। या अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, हाउ विल यू go and deploy? Okay, so your answer could be like you will log in into the AWS console, and once you log in into the AWS console, you will go to, for example, here into the search bar, you will go here into the EC2. These are the virtual servers in the cloud. आप यहाँ गए and यहाँ जाने के बाद you have to go to instance running, you have to launch instance and start launching your EC2 instance, right? कि आप अपना EC2 instance को क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज यू शुड नो कि किस रीजन में आपको उस मशीन को डिप्लॉय करना है, राइट? अगर users who will be accessing this particular server or who will be accessing this particular application, if they belongs to Mumbai only, okay, then I can deploy this machine in Mumbai. Yeah, we may get certain recommendation from our team or from our managers कि भाई किस रीजन में हमें अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन करना है। ओके, सो वी शुड हैव दिस क्लैरिटी विद अस कि हमें कौन से रीजन में अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन करना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिप्लॉय। सो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है like if you have to provision your EC2 instance, how will you do that? You have to say I will authenticate first from the console, then I will choose out the region. After choosing out the region, then I will go to launch instance and then I will launch. How will we launch? That we will discuss in some time. Okay, thank you so much. See you in some time.